Good morning, class. Today we are going to start a new lesson. That is lesson number 13, Pythagoras theorem. So, Pythagoras theorem. This theorem is applied on the right angle triangle. Do you heard about right angle triangle? So, let me write the definition of right angle triangle, then I will explain. See, right angle triangle. Write the definition, everyone. A triangle with one angle is right angle is called right angled triangle. I repeat once again, a triangle with one angle is right angle is called right angled triangle. See, this right angle triangle consists of three parts. One is a base, second one height, and third one is hypotenuse. Base, height, and hypotenuse. See for example, this is one triangle ABC. Definition is given, one angle is right angle. Now right angle means 90 degree, so this is the sign of 90 degree. तो ये हो गया right angle. So this triangle is known as a right angle triangle. Now this triangle consists of three parts: base, height, and hypotenuse. See, the line on which the height is standing, जिसके ऊपर perpendicular है, that is the base. This is known as a base. Second thing, height. This one is a height. And the side opposite to the hypotenuse right angle is known as the hypotenuse. Hypotenuse. If you want, you can write the definition also of hypotenuse. Write everyone the definition of hypotenuse. So write the definition of hypotenuse. The side opposite to the right angle is called hypotenuse. This is the right angle. इसके opposite में ये side है, so this is the hypotenuse. This right angle, it can be like that also. See, this right angle, ये ऐसा भी हो सकता है, और ये right angle यहाँ पे रहेगा. So in this case also, ये right angle है, तो इसके opposite में ये side है, तो यही hypotenuse होगा. Okay, ये आपका base हो जाएगा, and this is your height. Understood? It may like that also. ऐसा. So in this case, this is the right angle, तो इसके opposite में ये side है, तो यही आपका hypotenuse होगा. This is your base and this is your height. Understood everyone? Right angle triangle and its part. Everyone write the definition of right angle triangle, hypotenuse, its part, and draw all the diagrams. Okay, then we will start what is the Pythagoras theorem. Write it. Okay, now come to the Pythagoras theorem. Now come to the Pythagoras theorem. Write the statement. In right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. Okay, everyone wrote the statement of Pythagoras. इसका मतलब होता है कि just assume this is an right angle triangle. Okay, see, this is the right angle triangle. This one is 90 degree. तो 90 डिग्री के अपोजिट में ये साइड है, सो इसका ये साइड तो ये हो जाएगा hypotenuse. And according to the statement, the square of this hypotenuse, this is a base and this one is height. So according to this, square of hypotenuse is equals to the sum of square of other two sides, म्हणजे base square plus height square. Understood? This is the Pythagoras rule. This one is known as Pythagoras theorem. For example, the name of this side is, this triangle is ABC. तो BC base है, AB height, and AC is a hypotenuse. So this one becomes AC square equals to base is what? BC square plus AB square. Understood? Pythagoras theorem. So write all this thumb, then I will explain one examples on the basis of Pythagoras theorem. Okay, for example, right angle triangle PQR is given.
In that PQ is 8 centimeter and RQ is 6 centimeter. We have to find the PR. PR अपने को निकालना है by using this formula. So how to do? First, पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस, बेस एंड हाइट क्या है. दिस इज़ द 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट में ये साइड है, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये बेस और ये हाइट. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय Pythagoras theorem, write the formula. Hypotenuse square equals to base square plus height square. Now see what is the hypotenuse, PR. So write PR square equals to base is RQ, so write RQ square, and height PQ, so PQ square, like that. Just assume this PR is X, okay, so it will becomes X square. Therefore X square equals to RQ कितना है 6, तो 6 स्क्वायर प्लस ये 8 स्क्वायर. Therefore X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 का 64. अभी ये दोनों को प्लस करो, 64 और 34 को प्लस करोगे तो आएगा 100. ये आ गया एक्स स्क्वायर, बट हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो टेक द स्क्वायर रूट, राइट लाइक दैट. एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर 100. यहाँ रीज़न आपको लिखना पड़ेगा, राइट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, in bracket write taking square root on both side. Understood? Now tell what is the square root of 100. Square root of 100, 100 किसका स्क्वायर है बताओ जल्दी. So square root of 100 is 10. Therefore PR की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर. So therefore hypotenuse फाइंड आउट करना था, तो hypotenuse you got 10 centimeter. Understood? Now write one more example. See in triangle XYZ, angle X is 90 degree, तो इसके अपोजिट साइड ये है, तो ये hypotenuse हो जाएगा. Here hypotenuse is given 25 centimeter, height is given 20. We have to find the X, means base. X find out करना है. So write in triangle XYZ, angle X is a 90 degree. Write this. In triangle XYZ, angle X is 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, first write the formula. Formula is what? Hypotenuse square equals to base square plus height square. Now tell what is the hypotenuse? YZ. So write YZ square equals to base is XY plus height is XZ. अंडरस्टूड. नाउ पुट द वैल्यूज़, जो दिया है वो लिखो. वाई जेड दिया है तो राइट 25 का स्क्वायर. एक्स वाई इज़ नॉट देयर, एक्स वाई नहीं दिया है, वो हम लोग को निकालना है. तो जस्ट अज्यूम करो एक्स वाई ए है. सो राइट हियर ए की स्क्वायर प्लस वाई जेड इज़ गिवन 20 दिया है तो 20 का स्क्वायर. इतना समझा आपको. देन राइट व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 25. 625 इक्वल्स टू ए का स्क्वायर इज़ ऐसे ही रहेगा और ये 400. अब ये 400 देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है और ये वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं इधर लाऊंगा, ये माइनस हो जाएगा. सो वी राइट इसको अंडर रूट 225 इक्वल्स टू ए. तो यहाँ रीज़न क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लाइक दैट. सो व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 225. 225 किसका स्क्वायर रूट है 15 का. सो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर. तो ए क्या है एक्स वाई इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. आपको बेस मिला 15 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड ऑल दिस सम्स.
So solve all these sums, write the definition in your notebook. Then we will start a practice set on the basis of this.